सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और एक और नया वीडियो आज आपके लिए फिर से शुरू हुआ है प्रगति मैदान से। और आज यहाँ पे लगा है दिल्ली वाटर एक्सपो 2023, जिसके सेकंड एडिशन ये प्रगति मैदान में लगा है। आप लोग यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं आपके वाटर सोल्यूशन के लिए काफ़ी सारी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। आपको काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आए ने पार्टिसिपेट किया इस एग्जीबिशन में, जो कि आपको डायरेक्टली B2B में और B2C में किसी भी तरीके से आप लोग इनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के रिगार्डिंग अगर आप कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास है। तो वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सारे एग्जीबिटर से बात कराएंगे, उनके प्रोडक्ट के बारे में दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर से भी बात कर लेंगे किस तरीके से पूरा एग्जीबिशन रहता है। अगर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है आगे नेक्स्ट टाइम इस एग्जीबिशन में तो आप लोगों के लिए भी क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और न्यू बिजनेस आइडियाज वीडियोस आती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। Hi, I'm Ramya Narayanan, editor for Water Today magazine, and this is the Water Today exhibition, and we are promoting on water and wastewater management. So we have exhibitors who are participating and manufacturers who are participating from the wastewater treatment industry. About Water Today, we are a 17-year-old company, and we have been doing exhibitions, conferences, workshops for the past 16 to 17 years now. We also have a magazine, monthly technical magazine that we publish, which is contributed by articles from experts in the water and wastewater technology management. So how many exhibitors participating this time? In this current exhibition, we have about 80 exhibitors. This is our second year in Delhi. So from here we begin to start up and expanding our reach to Delhi. ठीक है, इस एग्जीबिशन में मतलब किन लोगों के लिए ज्यादा वैल्यूएबल रहने वाला है, कौन लोग यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं? ये एग्जीबिशन उन लोगों के लिए है जो वाटर ट्रीटमेंट बिजनेस में है, इंडस्ट्रीज है, जैसे कि वेस्ट वाटर जिन कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जनरेट होता है। हर इंडस्ट्री, हर मैन्युफैक्चरर को वेस्ट वाटर जनरेट होता है। सो उसे कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन रेगुलेशंस फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जैसे कि यू कैन नॉट डिस्चार्ज वेस्ट वाटर इनटू द रिवर्स स्ट्रेट अवे। कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है। तो पैन इंडिया से एग्जीबिटर ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ से? हाँ, पैन इंडिया से भी, एज वेल एज इंटरनेशनल कंपनीज, लाइक वी हैव इंटरनेशनल कंपनीज लाइक 3M वाटर दैट हैज कम। पैन इंडिया लेवल पे वी हैव इरिगेशन कंपनीज लाइक डेल्टा इरिगेशन, जैन इरिगेशन, who look into irrigation sectors, water resources, groundwater resources sectors. फिर there is companies like 3M जो water supply membrane separation पे है. Then there is Scallion, that is an international company also that is participating over here. So next exhibition दिल्ली में या कह सकते हैं या कहीं पे? Delhi will now be, this is a 3-day program here. It will be next again in July, August. Our next event is focusing in Bangalore, and in 24 we will be doing Chennai. So abhi 23 में we have it in Bangladesh, like I think November, and Bangalore Water Expo also in November end. Great. So पैन इंडिया कोई एग्जीबिशन में एग्जीबिटर पार्टिसिपेट करना चाहे आप लोगों से काइंड ऑफ, Yes, तो उस लोगों की आपका कोई ईमेल, वेबसाइट या कांटेक्ट नंबर रहेगा जिससे कोई कनेक्ट कर पाए? So we have our contact email, that is you can visit Bangalore as waterex.in. And for Chennai Expo, we have waterexpo.biz. You can always log in and check into the Water Today's Water Expo websites, and all our events are listed there, date-wise, industry participation, exhibitors list, the kind of visitor profile that comes in. So you can reach us out for participation, for conferences, trainings that we all organize at pan-India level. I'm really hoping that we are going to have visitors coming from the wastewater treatment industry, and they're going to be benefiting a lot with this exhibition. Thank you. Thank you. Hi, good morning. I'm Dr. Rajesh Bhatt from Scallion Energy Water Corporation, which is now named as Scallion Leaf Protect. We are from Bangalore. Basically, ours was a research organization, and now we are coming up in a large scale for the commercialization of the latest effluent treatment, sewage treatment, water treatment, and even desalination. This technology is entirely different from the conventional technologies what we use today. The conventional technology is basically the primary system, which consists of chemical addition, then secondary system consists of the bacterial oxidation, followed by RO, then evaporator.
but this works with a different principle called sending the frequency of disassociation. It works on the principles of physics basically, not chemistry, and this is called aquatron, which contains the antennas of different meta complexes, alloys, and we have a artificial intelligence system which will produce the frequency of disassociation, which is basically a short wave frequency which will be sent into this aquatron, and aquatron contains the raw water, which it can be any water. It comes from a industry or a sewage or from a desalination seawater. So then once it goes inside, and when we send the frequency of disassociation, in this technology all the dissolved solids will be disassociated to its respective elements. For example, if it contains zinc sulfate, the zinc, sulfur and oxygen will be disassociated, and oxygen will go into the atmosphere, and zinc and sulfur will settle as pure elements. So once all the dissolved solids are converted into suspended solids, they will be filtered based on the particle size. Okay. There are different particles present in the water. They will have a different size. And once the filtration is done, then the final, it will go to a system called RF4D, which is different from RO principle. It is not reverse osmosis. It is reduction facilitated osmotic diffusion. And once that happens, the clean water, which is of IS 10500 standard, is drinking water only. You feed any dirty water, you will get drinking water only. So this is in a nutshell about this technology. So thank you so much for this connect. Thank you. It's my pleasure. With गुड you. मॉर्निंग फ्रेंड्स, उर्फ पटेल फ्रॉम डायनेमिक इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग मल्टी डिस्क स्क्रू प्रेस मैन्युफैक्चर करते हैं जिसका यूज सॉलिड लिक्विड सेपरेशन के लिए यूज होता है, स्पेसिफिकली सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। This is a next generation equipment compared to the conventional decanter centrifuges and filter press. We provide a better power efficient, power consumption, low power consumption and low maintenance equipment compared to these conventional equipment. So the power consumption of this is around 10 times less than a conventional decanter centrifuge, and the maintenance cost is virtually zero, which is because of the low RPM, the low machine speed, which is around 4 to 6 RPM. So this is the next generation product of multi-disc screw press. Thank you. तो कोई कनेक्ट करना चाहे B2B में तो ईमेल आईडी नंबर वगैरह कुछ आपका क्या रहेगा, बताएंगे प्लीज? श्योर। सो आप हमें इस कांटेक्ट पे, ये नंबर है और ये हमारा ईमेल आईडी है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज आवर website which is called www.dynamicequipments.co.in. We are based out of Ahmedabad. Thank you. Yeah, I'm Ajay Kumar Pandey. I'm from Prince. Prince is started their manufacturing plant in 1987 in a PVC. So they provide PVC solution to the industries as well as the household applications. We have more than 8 plants. In the north, we are catering from Haridwar plants and Jaipur plants. Also, we have some plants in Athar, Silvassa, and some more plants in Chennai. So we are supplying this kind of solution to the industries as well as the household applications. We are manufacturing CPVC, UPVC pipe and DWC pipe. In the CPVC, UPVC, we have different segment. In a different segment means we have a industrial CPVC, generic CPVC. So this kind of a product we are manufacturing. सो कोई कनेक्ट करना चाहे B2B में तो क्या ईमेल आईडी कांटेक्ट नंबर रहता है आप लोगों का? ajay.pandey@princepipes.com. My name is Namit, and this is all the products. We are a swimming pool accessory manufacturing company. The company is called Pool Aids. We've been in business since 2004, and we are leading suppliers to all the OEMs, swimming pool manufacturers all over India. ओके, तो स्विमिंग पूल से रिलेटेड आप सारी चीजें बनाते हैं काइंड ऑफ? स्विमिंग पूल से रिलेटेड हम सारी चीजें नहीं, बट मोस्टली सब चीजें बनाते हैं. देयर आर फ्यू आइटम्स वी डोंट, बट अदर देन दैट कंपटीशन इक्विपमेंट, पूल सराउंड, मेंटेनेंस इक्विपमेंट, अंडर वाटर लाइट्स, लैडर्स, ग्रेटिंग्स, वाटरफॉल्स, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स वी मेक. ओके, सो देखा जाए तो आप लोगों का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग रहता है सर ये सारा? जी बिल्कुल. ये यहाँ पे आपको जो भी चीजें दिखाई देंगी वो हम खुद दिल्ली में
मेड इन इंडिया। ठीक है, तो इसका फीचर्स को वारंटी गारंटी प्रोवाइड कराते हैं? बिल्कुल 1 साल की हर प्रोडक्ट की वारंटी है। हर प्रोडक्ट के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं। कोई भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, वी फ्री रिप्लेसमेंट है उसकी। So all that is provided by us. तो सर कांटेक्ट करना चाहे कोई आपको B2B में, तो नंबर, कांटेक्ट, ईमेल आईडी क्या रहता है? हाँ, हमारा नंबर है 9811607783 और ईमेल आईडी है poolaids1@gmail.com. So thank you so much for this, sir. Morning everyone, myself Rajiv Biswas and we are basically representing our company Millennium Instrument Limited. हम लोग basically working on field instrument like pressure gauge, temperature gauge, RTD, thermocouple, thermoil, as well as flow control units like valves, as well pneumatic operated valves and electrically operated valves like ball valves, butterfly valves. We are contract manufacturing, as well as you see there we have a complete range of instrumentation like pressure gauge, temperature gauge, RTD, thermocouple, thermoil, as well as ultrasonic flow meters and pneumatic operated rotor. We represent rotor in chemical process industry like rotor make new electrical actuator as well as globe control valve. Basically हमारा contact number है जो है info@mipl.com, as well as हमारा दूसरा एक मेल आईडी है जो है मेरा मेल आईडी है myself rajiv.biswas@mipl.com, and as well as my contact number is 9088775501. So thank you. हेलो, मैं पूजा फ्रॉम यश वाटर प्योरीफायर प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग मेनली आरओ प्लांट में डील करते हैं। आरओ प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, होलसेल में करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ऑल स्पेयर्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास आरओ प्लांट के। ठीक है, तो हमारी क्वालिटी सर हाई होती है। इसके अलावा अगर किसी को सस्ता चाहिए तो चीप भी होती है। अगर क्वालिटी तो रेट के हिसाब से होती है। सो दिस इज एक्चुअली हम लोग हर एक पार्ट की 1 साल की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। सो कनेक्ट करना चाहे आप लोगों से B2B में, ईमेल आईडी वगैरह क्या रहता है? ईमेल आईडी है हमारी वेबसाइट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं www.yashwaterpurifier.com. Sir, good morning. Actually, we are the manufacturer of roots blower, plus dewatering machine, centrifugal blowers, and ring blowers. Basically, roots blower used in STP, ETP plant, cement plant for pneumatic purpose. In the paper industry, for the knife edge application, we can use the roots blower. For the dewatering machine, basically it's used in STP, ETP plant for de-wasting for the solid liquid separation purpose. And we can also, our smallest blower, roots, it's a root type blower, twin lobe type, and its capacity is minimum is 5 cubic meter, and we can also supply the ring blower and the centrifugal blower that you can see. And we are based in Bahadurgarh. We have 4 plants here, own manufacturing with the CNC, VMC machine and all type of instrument that we can provide there. तो कोई आपका B2B में कनेक्ट करने के लिए ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर क्या रहता होगा? सर, ईमेल आईडी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा एक नंबर है कांटेक्ट 7027029009। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, हम तक रीच कर सकते हो उससे, और वहीं से आपको रेफरेंस मिल जाएगा, हमारी मेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। I'm Jayan Shah from Shah Brothers. We are a Mumbai-based company and into filtration for more than 30 years now. We are basically importing various types of filters and from a company called Filtech Taiwan, and we also do specific filters for any industry to their requirements. So that's our strength. So we work with the customers on a basis with considering their applications. So if you have a look at our product range, we have a complete range of cartridge filters, both in spun and in pleated, starting from 5 inches to 72 inches we can give you for various industries. Right now we are the largest importers of this in India, and specifically working with all the customers, we have been very happy
So if anyone wants to connect with you in B2B or B2C in Northern India, Pan India, so what's the right process? Email ID, contact number? Yes, they can always come and have a chat with our sales engineers and our channel partners wherever we have, and then we can set up whatever sales they are looking at, any product range in filtration. So thank you so much for this, sir. Thank you. Hello everyone, my name is Siddesh Tari and I am working in Ancrom Enterprises. Right now I am in Delhi Water Expo and we are presenting over here our SmartChem instrument, which is a discrete water analyzer. So this instrument is very specific for analyzing different water parameters. So as you can see, we can highlight many of the parameters like alkalinity, nitrate, nitrite, phosphates. Like all those parameters can be done completely automated. So if we can have a glance at the instrument, we see over here the whole overview of the instrument in which we can keep our reagents, samples, and here the reaction happens and all the results can be identified into the software. With the presetted method, it gives you a very much more beneficial parts where you can just get your results within few clicks. You can connect us at www.ancrom.in. We are based in Mumbai and we also give some demos if we require. It depends on the customers and we can provide you with the demo. Just give us a mail and we will be there for you. Thank you so much for this. Thank you. मैं अनुज शर्मा, प्लांट हेड, फ्लो स्टार इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद। हम प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग फ्लोमीटर, रोटामीटर एंड लेवल गेज, बॉयलर एंड केमिकल प्लांट के लिए, एनटीपीसी थर्मल पावर स्टेशन के लिए, तो ये प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट में हम डील करते हैं। तो कोई कनेक्ट करता है तो ईमेल आईडी नंबर वगैरह है कोई इस कंपनी का? हाँ, FSEPL ईमेल आईडी है FSEPL@flowstar.co.in, naveen@flowstar.co.in, service@flowstar.co.in। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सर। माय नेम है रवि गोस्वामी। हमारी कंपनी यूफ्लेक्स इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा बेस्ड कंपनी है। हम लोग जिंकल स्टील टैंक में डील करते हैं। मोस्टली टैंक वाटर के लिए होता है, फायर वाटर, रॉ वाटर, डोमेस्टिक, किसी तरह के हर एप्लीकेशन में यूज़ होता है टैंक। डोमेस्टिक अपना इंडस्ट्रियल हो गया, कमर्शियल हो गया, रेजिडेंशियल हो गया, तो इस तरह के टैंक होते हैं। टैंक की लाइफ अच्छी होती है। पहले मोस्टली आरसीसी टैंक यूज़ होते थे वाटर के लिए, लेकिन आजकल इस तरह के टैंक मेटल टैंक यूज़ होते हैं। तो पर्टिकुलर इसका यूज़ क्या मिल सकते हैं? पर्टिकुलर यूज़ इनका वाटर के लिए ही है मोस्टली। तो आरसीसी से बहुत इनकी लाइफ अच्छी होती है, मोर देन 20 ईयर्स की लाइफ है। अंदर इसमें पीवीसी का मटेरियल होता है, फूड ग्रेड मटेरियल होता है, एंटी-एलगी होता है, और ये मेटल ये जो है ये अपने स्ट्रक्चर सपोर्टिंग के लिए है। अंदर पीवीसी का मटेरियल में पानी स्टोर रहेगा और ये पानी की टच में नहीं आता मटेरियल, तो इस करके इसकी लाइफ को इसमें जंग लगने का सवाल ही नहीं होता। ठीक है। वेबसाइट हमारे www.uplexinfra.com है हमारी वेबसाइट। ईमेल आईडी sales@uplexinfra.com, इन्फो है, ये हम लोग जारी है। अब कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा कोई? 9899057707। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर। वेलकम।